Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome in Metropolitan online classes. And I'm your teacher for science subject. Today, our chapter is about growth and reproduction. With the name, your concept would have got clear that this chapter is about how plants grow and how they reproduce. But my question to you all is why plants are useful? What are they providing us? And how plants grow? What are the causes which help the plants to grow? If you are familiar, then you must know why plants are useful. Have you ever wondered? Let me answer you. Plants are useful because they provide us with medicines, food like vegetables, fruits, and shelter to animals and humans. They also play an important role in exchange of gases, means they provide us with oxygen. The second question is what are they providing us with? And third is how plants grow and what are the causes? How plants grow. As a child, you must have heard that plants grow by seeds, right? चाइल्डहुड से तो यही पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स ग्रो होते हैं सीड्स के थ्रू। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि उनकी कॉजेस क्या हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं जो उस सीड को ग्रो करवाते हैं, सीड खुद कैसे ग्रो हो रहा है, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। Reproduction, what is the meaning of reproduction itself? Reproduction के exactly meaning क्या होते हैं? First, make a general concept. Reproduction means anything or any individual that reproduce, जो दोबारा बनता है, but how? With the parents. Okay? And parents का सिर्फ ये नहीं कि parents से similar हो, but also वो parents का कोई part से निकल के बन रहा हो, ठीक है? So in case of plant, this is in case of plant. In case of human, reproduction simply means यानी दोबारा बनना, ठीक है? So in case of plant, reproduction is the process by which new individual or organisms are produced from their parents. Now, there are different ways in which reproduction is taking place in plant. Now, one is seeds, which we all are very much aware of. Number two is spores. And number three is vegetative propagation. If you can see on your screen, I have shown you some pictures. In vegetative propagation is the most common example that we can see in our daily basis, let's say in our kitchen. Have you ever wondered or noticed that how those onion के ऊपर वो जो छोटे छोटे bulbs निकले हुए होते हैं, पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे से जो plants निकले हुए होते हैं, या पोटैटो पे ही छोटे छोटे से और पोटैटोस के पीसेस निकले हुए होते हैं, वो एक्चुअली पोटैटो नहीं होते, वो बडिंग प्रोसेस होता है। सो वो आपको डिटेल इंशाल्लाह हम कभी और समझाएंगे। फॉर यू राइट नाउ टू अंडरस्टैंड इज कि पोटैटो और अनियन में हमने कभी देखा हुआ है ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स निकले हुए और उनमें ही फ्रूट छोटे से पोटैटो ही निकल रहा है, या अनियन के ऊपर छोटा सा अनियन एक और निकल रहा है, तो ये सब क्या होता है? वेजिटेटिव propagation. So I hope you guys would have understood this part. Hope your general concept about reproduction would have been clear by now. In short,
Reproduction in plants mean that the new plants are growing from the part or from their parents and have similar properties of their parent plant. Okay, now we will discuss about reproduction by seeds. Now, first thing you must remember, whenever the term reproduction by seeds come in front of you during papers or during your test, you must remember these points. That such reproduction means production by seed will always take place or mostly take place in flowering plants. Why? Because flowers can turn can turn into fruits, and fruits contains seed inside of them. तो याद रखें जब भी टर्म रिप्रोडक्शन बाय सीड आए तो वो हमेशा कहाँ टेक प्लेस करता है? फ्लावरिंग प्लांट. Seeds are produced inside fruits which develop from flowers. Same point. ठीक है? So flowers are important organ in this reproduction. Okay? इस तरीके के रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स बहुत important रोल प्ले करते हैं. Hope you guys would have understood this part. Structure of flower. Over here, if you can see on the screen, flower is further divided into four parts, basic four parts. The first part we will discuss is the stamen. Stamen is the male part of the flower, and it is further divided into two parts, which is anther and filament. Anther carries pollen grain. Pollen grain are in yellow color. If you can see on the screen, जो corn shape का ऊपर से नोक जैसी stuff नजर आ रहा है वो anther है और उसके अंदर क्या होते हैं? Pollen grain which are yellow color. Down you can see the long thread like a structure holding the anther. That structure is known as filament. Filament helps to hold anther and prevent it from falling over, especially uh, at the high windy seasons. ठीक है? So we came to know that the male part is stamen, further divided into how many? Two parts, anther and filament. Then comes to the second part of the plant, pistil. Pistil is the innermost part of the plant and it is the female part. Okay, it's the female part of the flower. It is further divided into how many? Into three parts, stigma, style and ovary. Then comes to the तो इतना समझ गए ना कि फीमेल पार्ट जो है वो क्या है? पिस्टल. मेल पार्ट कौन सा? स्टेमन. स्टेमन में कितने डिवाइड हो रहे हैं? टू पार्ट्स में, एंथर एंड फिलामेंट. फीमेल थ्री पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब आ जाते हैं हम सेपल में. सेपल are the smallest leaf-like structure which are located at the base of the flower and protect the developing bud. जब बड डेवलप हो रही होती है यानी जब फ्लावर की बड डेवलप हो रही होती है तो सेपल्स को कवर करा हुआ होता है, उसको ढका हुआ होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी डैमेज. पेटल, fourth part of the plant. It is the brightest part and out in the outer region and is protected during development by bud. Subhanallah. ठीक है, तो बर्ड क्या क्या काम कर रहा है? बर्ड प्रोटेक्ट कर रहा है पेटल को. और बर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेपल कर रहा है. सो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज को उसके बैलेंस के हिसाब से रखा हुआ है. बर्ड प्रोटेक्टिंग द पेटल
जो कलरफुल पेटल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, और बर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेपल। Now, with another topic, which is pollination. What is exactly pollination? If you would have understood my previous part about the structure of flower, then you would know the answer. बहुत simple. एंथर से ट्रैवल करते हुए स्टिग्मा पर रीच करना पोलन ग्रेन्स का वाया बाय एयर, बाय एनिमल, बाय इंसेक्ट, बाय बर्ड, etc. This is known as pollination. मैंने कहा था ना आपको कि एंथर एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज कर देता है पोलन ग्रेन्स को, और फिर वो पोलन ग्रेन्स वाया एनी वे ट्रैवल करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं. So remember, let's focus on the screen. Focus on the screen. Pollination is very important part in reproduction. In what? Flowering plant. Remember, where there's flower, there's pollen grains. Where there's pollen grains, there pollination will take place. Very simple. From anther of a flower are transferred to stigma. पोलन ग्रेन्स कहाँ से? एंथर ऑफ फ्लावर से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा पे. ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. ठीक है, या तो सेम flower or another flower of the same plant. ठीक है. Now pollination depends upon its type, how that pollination and in what way it's taking place. So in this case it is further divided into two types: self pollination and cross pollination. With the name or with the term self pollination, your concept should be clear. Self pollination means that it's taking place within itself. Let's take example, a flower. एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर जैसे ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन, तो वो क्या हो रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन. या उसके साइड पे एक और फ्लावर मौजूद है, तो उसी पर जाकर वो एंथर से और दूसरे यानी उसी की नेबर फ्लावर जो उसी का टाइप का है उसी पे पहुंच गया, उसके स्टिग्मा पे स्टिक हो गया, तो वो भी क्या होगा? कंसिडर कर जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन. Pollen from one flower fall on the stigma of the flower of the same plant. Understand? In case of cross pollination, this takes place in distance. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन थोड़ा डिस्टेंस में जाके होता है. And how it takes place? Via by birds, insects or wind. Here pollen grains fall on the stigma of same flower or another flower of the same kind. Understood? Kind एक ही होनी चाहिए. Let's take an example of sunflower. ठीक है, sunflower ले लेते हैं. For example, sunflower का एक pollen grain जो है वो हनी बी के ऊपर स्टिक हो गया. वो हनी बी फ्लाई करते हुए गई, काफी डिस्टेंस में वो एक और सनफ्लावर बैठी. उस सनफ्लावर पर जो हनी बी पे स्टिक हुआ हुआ पोलन ग्रेन था वो उसके स्टिग्मा पर लग गया उस फ्लावर के. वो फ्लावर कौन सा था? वो भी सनफ्लावर था, तो काइंड एक हुई ना. सो इन दिस वे क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. काइंड एक होगी लेकिन डिस्टेंस पे जाकर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस. Germination. What is germination of seed? Now, the term germinate means what? For example, let's say generator. What is the role of generator? Generator क्या करता है? अपने अंदर खुद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, खुद से बनाता है ना.
सिमिलरली सीड भी ऐसे ही करता है। सीड जर्मिनेशन मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें सीड दोबारा से खुद से प्लांट ग्रो कर ले या प्लांट में डेवलप होना शुरू हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जर्मिनेशन और सीड जर्मिनेशन। The development of seed into new plant is called seed germination. The things which are required for germination to take place are water, air, warmth, and energy. Now, the question is, ठीक है, सब कुछ मिल गया, सीड ने जनरेट करना शुरू कर दिया, जर्मिनेटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन वाटर क्या कर रहा है? अभी तो प्लांट भी नहीं ग्रो हुआ जिसको वाटर की नीड हो। Seeds also need water, a little amount, but they do need water. Why? Because they dissolve the stored food and produce it into energy, which help in the initial part of germinating of seed. समझे? यानी इनिशियल यानी बिल्कुल स्टार्टिंग की जो पार्ट होता है उसमें सीड जर्मिनेट करना कैसे शुरू करता है? जब उसका डिसॉल्व फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अब एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है? बाय वाटर। हैव यू एवर नोटिस और एक्सपेरिमेंट एट होम बाय योरसेल्फ? ये तो सब नहीं करा होगा। ऑरेंज के सीड देखें, उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है, उस हार्ड शेल को पील करें तो उसके अंदर एक छोटा सा ग्रीन कलर का एक बहुत प्यारा सा सीड होता है। जब हम उस सीड को जोर से बॉटम में प्रेस करते हैं तो होता क्या है, उसमें से लिक्विड थोड़ा बाहर आ जाता है। वो लिक्विड जो होता है उसके बॉटम में स्टोर हुआ हुआ फूड होता है। तो ये ही फूड जो है वाटर क्या करता है? एनर्जी में चेंज करता है ताकि क्या हो? सीड प्लांट में कन्वर्ट हो। Plant also help embryo to waters also help embryo to break seed coat. वंस प्लांट उसके अंदर डेवलप हो गया तो वाटर क्या करता है? वो एम्ब्रियो में से सीड कोट को पील ऑफ करने में, झाड़ने में हेल्प करता है। Cell of germinating seed use oxygen to produce energy from dissolved food. सेल्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं सीड ताकि क्या हो? जर्मिनेटिंग सीड यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम डिसॉल्व फूड। सेम बात कि जो एनर्जी जो होती है डिसॉल्व फूड में, वो क्या करते हैं? वो सेल्स को जर्मिनेट कर देते हैं। सेम थिंग, a cell germinating seed also need warm air and active cells for rapid division. ठीक है, अब हम सोचें कि गर्माहट, वार्मथ मतलब गर्माहट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सीड और प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा हाई टेम्परेचर। Too excessive high temperature can damage a plant. But if you have ever noticed that most crops, most vegetables, most plants grow in warm temperature in summer, because warmness is also necessary for the growth of plant. Understand? After some time, shoot will grow upward. Once the seed has grown into a plant and the seed coat has shredded down, what will happen? The stem part will grow upward and the root part will grow downward. At this stage of germinating, the seed is called seedling. ठीक है, सीडलिंग कहते हैं इस पार्ट में जब छोटा सा लीफ बाहर निकल कर आ जाए अपने सीड में से, और अभी वो पूरा प्लांट ना बनाओ तो उसको क्या कहते हैं? सीडलिंग। जर्मिनेशन ऑफ सीड पार्ट 2, इसमें डिस्कस करेंगे व्हाई सीड्स डू नॉट जर्मिनेट। अभी हमने पढ़ा था कि सीड्स हाउ दे जर्मिनेट, अब हम पढ़ेंगे why seeds do not germinate. What are the causes
that do not let germination to take place. Most plants produce seeds we all are aware of, but sometimes it happens that the seed does not completely grows, means it is immature, अभी पूरा develop नहीं हुआ है. And what happened? Somehow it separates from its parent plant, or like अभी अंडर डेवलपमेंट था, फ्रूट के अंदर किसी बर्ड ने किसी एनिमल ने खा लिया तो वो सीड कहीं जाके फॉल हो गया, कहीं गिर गया. सो क्या होता है, इस तरीके से इमेच्योर सीड्स, फर्स्ट पॉइंट, इस तरह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इमेच्योर और अंडर डेवलप्ड सीड्स डू नॉट जर्मिनेट. सेकंड थिंग, some seeds are destroyed because of natural condition, like unfavorable conditions in which like they've been eaten by birds or insects. पूरा का पूरा फ्रूट खा लिया, सीड भी खा लिया, या इंसेक्ट्स ने उसको सीड्स को डिस्ट्रॉय कर लिया, या फिर रेन हो गई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विंड हुई जिसकी वजह से वो फ्रूट ही डिस्ट्रॉय हो गया. तो इस तरीके से भी क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन डज नॉट टेक प्लेस. Now, if a question in MCQs come example of seeds, so very simple: pea, beans, and rice, so etc. Maize. These are all what example of seeds. Now, structure of seed. In this case, if you can see in your picture on the screen, seed is further divided into three types, into three parts, and that is the outer part, which is seed coat, the inner part, embryo, and then further into two small sections, which is called cotyledon. Now, if you can see on the screen, the outermost hard covering, which is in brown color, is known as seed coat. Again, let's take an example of orange. कभी ऑरेंज को पील कर रहा होगा तो भी देखा होगा कि नोटिस कर रहा होगा कि ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, वो क्या होती है? सीड कोट. फिर उसके अंदर हम लोग क्या होता है, अब हम लोग उसमें वो किसको क्या, उसका वर्क क्या होता है सीड कोट का? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इनर एम्ब्रियो from being damaged, and उसके बाद हम आते हैं एम्ब्रियो पर. एम्ब्रियो का वर्क क्या है? एम्ब्रियो is a small baby plant. It is, in case of seed, is also known as seed plant. इसमें आप देखें इनिशियल शूट ग्रो में ऊपर टू एजेस पर. Once germination of seed will take place, यहीं से shoot ऊपर grow होगा and root below grow होगा. So embryo is what? Baby plant. Cotyledon are seed leaves in case of seed, otherwise they are known as baby leaves. These leaves will further grow into leaves or stems in further development of seed. Very short it was. I hope you guys would have understood the whole part. This section of class is further divided into part B, which we will discuss later. In case you do not understand, replay and listen once again. We'll be here to help you and guide you through always. Till then, stay tuned, stay home, stay safe, and keep doing hard work. Fi Amanillah.